ओके, आज हम अपर लिम्ब की आर्टरीज के बारे में करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी करना है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। तो हमारे पास सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी होती है। सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी जो है आउटर बॉर्डर फर्स्ट स्ट्रिप से स्टार्ट होती है और जो है ना टीरीज मेजर के लोअर एंड तक जाती है। ठीक है, लोअर एंड ऑफ टीरीज मेजर। तो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी जो है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है, जो इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर होते हैं। 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पार्ट के अंदर सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी होती है, जो इसे अपनी ब्रांच देती है। दूसरे पार्ट के अंदर 2 होती हैं, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी और लैटर थोरेसिक आर्टरी। तीसरे पार्ट के अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं, जिनका नेम होता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, अब मैंने बताया कि एक्सिलरी आर्टरी लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर पे खत्म हो जाती है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर से ही एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू कर जाती है ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी के एक्सटेंट में हम लिखेंगे फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, और ये क्यूबिटल फोसा तक जाती है। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी दरमियान में अपने बहुत से ब्रांचेस देती है, जिसका मैंने निमोनिक बताया है, कुछ थोड़ा सा मतलब इतना नहीं है, लेकिन उसके पिक्चर आप मेरे मोबाइल में देख सकती हैं। तो उसकी सबसे पहली ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांच। ठीक है, दूसरी ब्रांच हमारे पास कोलेट्रल ब्रांचेस होती हैं, जिनका नेम होता है एंटीरियर सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल ब्रांच और इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल ब्रांच। और तीसरी ब्रांच हमारे पास होती है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो होती है ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, अच्छा, तो सुपीरियर अल्नर आर्टरीज और सुपीरियर और इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच होती है, मस्कुलर ब्रांच होती है, और प्रोफंडा ब्रेकाई होती है। और उसके बाद एक ब्रेकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ लोअर नेक, एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट की लेवल पे क्यूबिटल फोसा होता है। क्यूबिटल फोसा के लेवल पे या एल्बो जॉइंट के लेवल पे हमारे पास जो ये ब्रेकियल आर्टरी होती है वो अपने 2 ब्रांचेस मेजर ब्रांचेस देती है, जिनका हम कहते हैं अल्नर आर्टरी और अल्नर और रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ अल्नर आर्टरी। ये जो छोटी फिंगर होती है, चीची जिसे कहते हैं, इसके स्टार्ट से हो जाती है अल्नर आर्टरी। ठीक है, तो अल्नर आर्टरी के डिस्क्रिप्शन में हम बहुत आसान सी बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे कि अल्नर आर्टरी जो है वो इन द अपर पार्ट एंड अपर 1/3 पार्ट ऑफ द forearm it will travel medially, and in the lower 1/3 part it will travel vertically. You can see in the lower part it is vertically, and from the upper 1/3 part it is about medially. ठीक है, then it will travel it will travel superficial to the flexor retinaculum to enter the palm, and in the hand it will course out. After passing superficially to the flexor retinaculum, it will give its superficial palmar branch and a deep palmar branch. Okay, so the superficial palmar branch it will give into the three common digital branches and one proper branch. Okay, and the deep branch it's very simple. In the palm it will move in the palm and will form the arch between the flexor digiti minimi and abductor digiti minimi. ठीक है, so it will supply here from the here towards the flexor digiti minimi and the flexor digiti minimi and the abductor digiti minimi. Okay, and now we will discuss about what are the branches of the ulnar artery. So it will give many branches, and with the mnemonics as muscles को AUP करंट लगा, मसल्स को AUP करंट लगा। ठीक है, API DP चेंज कर गई। ठीक है, तो इसकी निमोनिक मैंने बताया, इसके क्या क्या बनती है। M से बनता है मसल्स, तो मस्कुलर ब्रांच आ गई। ठीक है, करंट लगा से मुराद है कोलेटरल ब्रांच होगी, एंटीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच और पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच। ठीक है, फिर मैंने API आई। ठीक है, API से मुराद ये है कि आई तो दोनों में कॉमन है, एंटीरियर इंटरोशिया ब्रांच और पोस्टीरियर इंटरोशिया ब्रांच आएगी। ठीक है, देन मैंने बताया डीपी चेंज कर गई। डीपी चेंज करने का मतलब डी और पी है और सी इन दोनों में कॉमन है। डीपी चेंज का मतलब है डोर्सल पाल्मर ब्रांच एंड दी dorsal carpal branch and the palmar carpal branch. Carpal is common between dorsal and palmar. Okay, and we have already discussed about the superficial and deep palmar branch, and now we are going to discuss about the radial artery, which is not drawn in this limb. So I am going to draw
it along with describing you. Okay, so it was starting with the radial artery. The radial artery moved from the cubital fossa after the brachial artery, and it will travel with the lateral convexity in the forearm towards the wrist joint. ठीक है, from the wrist joint it will move backward towards the anatomical snuff box, and in the anatomical snuff box it will travel towards the interosseous spaces in the hand. In the interosseous spaces in the hand, it will travel towards the palm by going backwards, means here, and it will come in the palm. Here in the palm, it will divide into the dorsal and the palmar branches, that are dorsal, palmar branch, and dorsal will give uh, the dorsal is going to, wait a minute. So the dorsal at the dorsum of the hand, it will give at the dorsum and at the palmar. This is the dorsum hand and this is the palmar side of hand. So in the dorsum of the hand, it is going to supply the lateral side of the thumb, okay, and first dorsal metacarpal. This is the first dorsal metacarpal. This is the first dorsal metacarpal bone. So here it is going to apply, the radial artery will give supply towards the first dorsal metacarpal and the lateral side of the thumb. And in the palmar side, it is going to supply the first pollicis artery. ठीक है, it will travel as a pollicis principus artery, and it will travel as a radialis indicis artery. Radialis indicis, radialis as it is radial artery, and indicis means indices as fingers. So radialis indicis artery, and the principus pollicis means principus pollicis. ठीक है, so these are the arteries of upper limb. Thank you for watching.